हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे हैं, वेरी गुड. इन द प्रीवियस क्लास वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स. न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, ठीक है. एंड इन दिस वीडियो, today's video we are going to discuss about the very important thing, how these nucleotides are arranged to form nucleic acids. Okay, inside the nucleic acids, various nucleotides are arranged to form the complex structure that is called what? Nucleic acids. And we have already discussed nucleic acids are generally classified into two types. One is known as DNA, another one is called RNA. Okay, so various nucleotides are combined together to form a complex structure, and that structure is known as nucleic acids. Either it may be a DNA or it may be a RNA. Now the thing is that how that nucleotides are arranged, inside the nucleic acids. Okay, that thing in this class we are going to discuss. Okay or not? Clear? Very good. In this class we are going to discuss about the arrangement of nucleotides. Okay, how the nucleotides are arranged inside the nucleic acids. Okay, as we have already discussed, nucleotide consists of how many components? 3 components. What are those? Nucleotides में कौन कौन से components होता है? One is known as what? One is called sugar. Another one is called what? Phosphate group. Okay, another one is called nitrogenous bases. These are the 3 components that found inside the nucleotides. Okay or not? Clear? Very good. Sugar, देखो important topic क्या क्या है वो भी थोड़ा ध्यान में रखो, ठीक है. बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको ध्यान रखना पड़ेगा. इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ठीक है. देखो क्या होता है. सुगर contain how many carbon atom? 5 carbon atom. Already discussed. And that carbon atom, since it contain how many carbon? 5 carbon. That's why it is known as what? Pentose sugar. Okay. And in DNA, specifically in DNA, it contains the sugar what? It contains the sugar deoxyribose. Okay, and having the formula C5H10O4. We have already discussed about that. Okay, DNA में कौन सा सुगर होता है? DNA contain the sugar, that is क्या बोलते हैं उसको? deoxyribose. Simple. And the formula is C5H10O4. deoxy means राइबोस से एक सुगर, एक ऑक्सीजन कम होता है. राइबोस सुगर से एक ऑक्सीजन कम होता है, जिसको क्या बोलते हैं? deoxyribose. दैट जनरली फाउंड इन द व्हाट? डीएनए में होता है, ठीक है. ओके, देखो अभी हमको देखना पड़ेगा ये सुगर जो होते हैं, दो सुगर होते हैं. वन इज कॉल्ड राइबोस सुगर, अनदर वन इज कॉल्ड deoxyribose sugar. What is the basic difference between the ribose sugar and deoxyribose sugar? We are going to discuss structurally. Okay, देखो पहले हम देखें राइबोस सुगर कैसा होता है. देखो so this one is first carbon, second carbon, third carbon, fourth carbon, and this one is fifth carbon. Okay, देखो it contain HOH. This one is only H. Okay, देखो कैसा होता है. क्या देखो, this one is first carbon, this is the second carbon, this is the third carbon, this one is the fourth, and this one is the fifth carbon. That's why it is known as pentose sugar. Okay, it is called pentose, and that is called what? Ribose. Pentose, that's why it is called what? Ribose. Clear? देखो क्या होता है. क्या this first carbon, okay, this first carbon is generally attached with the nitrogenous base. Generally attached with what? Nitrogenous base. Okay, first carbon generally involved in the attachment or in the bonding with the nitrogenous base. देखो how the nucleotides are arranged. देखो कैसा होता है. Suppose
ये एक नाइट्रोजनस बेस है, नाइट्रोजनस बेस में सुगर ऐड हो गया, नाइट्रोजनस बेस gets attached with sugar and sugar bonded with phosphate. These are the arrangement. Okay, once again, nitrogenous base, the sugar and phosphate. This is the arrangement of nucleotide. This is one nucleotide. This is a nucleotide. ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिला के क्या होते हैं? They form a complex structure known as what? It is called polynucleotide chain. In the sense, it is also known as DNA or RNA. Okay, clear or not? Very good. देखो क्या होता है क्या? The bond present between these two nitrogenous bases. The bond present between two nitrogenous bases is called. This is known as hydrogen bond. The bond present between two nitrogenous bases is known as hydrogen bond. Okay. Another thing, the bond between base and sugar is known as glycosidic bond. Glycosidic bond. ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? थोड़ा याद करना पड़ेगा, समझ जाओ, समझना बहुत जरूरी है. ठीक है, देखो, the bond between two nitrogenous bases is called what? It's called hydrogen bond. And the bond between a sugar and a base is called glycosidic bond. Clear or not? Okay. एक दूसरा बॉन्ड होता है जिसमें सुगर और फॉस्फेट इन्वॉल्व होते हैं. ठीक है, सुगर और फॉस्फेट के बीच जो बॉन्ड होता है इसको बोलते हैं क्या? दिस बॉन्ड इज नोन एज फॉस्फो. सिंस देयर इज फॉस्फेट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड. क्यों बोलते हैं ऐसा, डिस्कशन करेंगे अभी. व्हाई इट इज नोन एज फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड. रट्टा मारना नहीं है, थोड़ा समझना है, हर समय याद आएगा. ठीक है, इसको हम रट्टा नहीं मारेंगे. क्यों? सुगर फॉस्फेट के बीच जो बॉन्ड होता है इसको क्या बोलते हैं? नहीं, इसको सर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बोलते हैं. नहीं, हमको जानना पड़ेगा कि सुगर और फॉस्फेट के बीच में जो बॉन्ड होता है वो क्यों उसको हम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहते हैं, दूसरा बॉन्ड क्यों नहीं कहते. दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट. व्हाई इट इज नोन एज फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड. दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग. ओके, देखो कैसा होता है अरेंजमेंट. सपोज देखो यहाँ पे राइबोस शुगर में कौन सा आया? राइबोस शुगर कंटेन फिफ्थ कार्बन. ओके, इन द फर्स्ट कार्बन दैट कंटेन एन H group and an OH group. Okay, this is the structure of ribose sugar. Another structure देखो, this is OH, H, 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 OH, H, CH2OH. Okay, देखो, this is the first carbon, first one, second one, third one, fourth one, and fifth one. 5 carbons. This is the formula of what? Deoxyribose sugar. Deoxyribose sugar. देखो, इन दोनों स्ट्रक्चर में the basic difference is that here the number 2 carbon atom 2 does not contain an oxygen atom. Okay, 2 नंबर कार्बन में क्या होता है? एक ऑक्सीजन कम होता है. ठीक है, that oxygen deficiency जिसके लिए उसका नाम क्या होता है? Deoxyribose. The name deoxyribose is only due to the deficiency of an oxygen in the second carbon atom of ribose sugar. Always remember, कौन सा कार्बन में एक ऑक्सीजन कम होता है? That is one and only second carbon. ओके, सेकेंड कार्बन में क्या होता है? एक ऑक्सीजन कम होता है. समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके, देखो, एंड दिस कार्बन नंबर 1 डायरेक्टली अटैच्ड विथ नाइट्रोजनस बेसेस. इट मे बी एडेनाइन, इट मे बी गुआनिन, जो भी हो. ओके, इट डायरेक्टली अटैच्ड. कार्बन नंबर 1 इन्वॉल्व विथ नाइट्रोजनस बेसेस. ये ऑलरेडी भैया क्या हो गया? इट ऑलरेडी रिजर्व्ड. ये रिजर्व हो गया. Carbon number 1 reserved. Why it is reserved? Because it gets associates with nitrogenous base. Okay, ये क्या करेगा? nitrogenous base के साथ bond करेगा. And this bond is known as what? Bond between sugar and base is called what? Bond between sugar and base is called glycosidic bond. It forms the glycosidic bond. G bond. Glycosidic bond.
देखो अभी कौन कौन सा रह गया, देखो 2 नंबर कार्बन में H है केवल। देखो बॉन्ड कहाँ पे होता है, बॉन्ड जहां यहाँ पे होता है जहां पे OH ग्रुप होता है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप जहां में होगा वहां पे ही बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, याद करना पड़ेगा। when in which places bond is formed, bond is always formed where an OH group is present. ओके बॉन्ड कहां पे होता है, जहां पे OH ग्रुप होता है। देखो अभी 1 नंबर कार्बन ऑलरेडी रिजर्व है, जहां की OH बॉन्ड है, जहां में क्या है OH बॉन्ड ऑलरेडी है एंड इट ऑलरेडी रिजर्व्ड। This carbon is not going to form any other types of bond because it always associates with what, nitrogenous bases. Another carbon that is, देखो 2 नंबर कार्बन में there is no OH group, 3 नंबर कार्बन एंड 5th नंबर कार्बन, 3 and 5th, देखो 3rd and 5th number carbon contain the OH group and this 2 group gets attached with the phosphate. किसके साथ अटैच होंगे, याद करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉस्फेट जो होता है फॉस्फोरिक एसिड के फॉर्म में, दिस फॉस्फेट गेट अटैच्ड विद आइदर 3 नंबर कार्बन और 5th नंबर कार्बन ऑफ दिस सुगर। क्यों, बिकॉज दिस टू contain the OH group. Carbon number 3 and carbon number 5 contain the OH group and that's why phosphate group is mainly attached with either 3 number carbon or 5th number carbon. That's why DNA में जो स्ट्रक्चर होता है ऐसा होता है, ऐसा होता है। One running from 5 prime to 3 prime, another running from 3 prime to 5 prime. ये 5 prime और 3 prime है क्या, if this phosphate attached with the 3 नंबर कार्बन में अगर अटैच होगा, if this phosphate attached with 3 carbon atom then it is known as 3 prime. Okay, and if this phosphate attached with 5 number carbon, OH group of 5 number carbon, then it is called 5 prime. Fixed. Why it is known as 5 prime and 3 prime? Because the 5 prime is the number of carbon. शुगर में 5 नंबर कार्बन में कौन सा ग्रुप अटैच होता है, फॉस्फेट ग्रुप होता है। यहाँ पे देखो सुगर लिंक्ड विथ व्हाट, फॉस्फेट ग्रुप एंड दैट बॉन्ड इज नोन एज व्हाट, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। व्हाई इट इज नोन एज फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, वी आर गोइंग टू डिस्क्राइब स्ट्रक्चरली, ये तुमको इजी हो जाएगा समझने में, ठीक है। देखो अगर फॉस्फेट ग्रुप 3 नंबर कार्बन में लिंक हुआ तो इट इज नोन एज 3 प्राइम। अगर फॉस्फेट ग्रुप 5th नंबर कार्बन में अगर लिंक हुआ तो इसको बोलते हैं व्हाट, 5th प्राइम। ओके, then how this phosphate linked with this two structure, now you are going to discuss structurally discuss करेंगे कैसे ये होता है। ओके देखो कैसे हम अभी देखेंगे how this phosphate group get attached with the 3 and 5th carbon of the sugar. Okay, देखो suppose this one is this one is OH, H, ये H, 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 OH, this is only H, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ deoxyribose। देखो कैसा होता है, कैसा देखो, so this carbon already get attached with what, this is attached with what, suppose adenine। okay, this is the nitrogenous base, ये अटैच हुआ है किसके साथ, adenine के साथ, खत्म उसका काम। नेक्स्ट देखो, नाउ देखो दिस कार्बन इज नॉट गोइंग टू फॉर्म एनी सोर्स ऑफ बॉन्ड, सेकंड कार्बन इज नॉट, देखो क्या होता है, द सेकंड कार्बन विल नॉट इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। ओके, बिकॉज देयर इज नो OH ग्रुप, यहाँ पे OH ग्रुप एब्सेंट नहीं होता है OH ग्रुप, दैट्स व्हाई दिस कार्बन will not involve in the process of bond formation. Okay, the thing is that the 3rd carbon and the 5th carbon is generally involved in the process of bond formation and 1 number carbon is already fixed, it already ये क्या हो गया है, ये reserved हो गया है, this one is reserved because it always attached with what, nitrogenous base के साथ ये अटैच करेगा, nitrogenous base के साथ सुगर मॉलिक्यूल का फर्स्ट कार्बन अटैच होगा एंड दिस OH ग्रुप विल रिमूव एंड दिस बेस विल बी एडेड विद द नाइट्रोजनस बेस, द बेस विल अटैच टू द फर्स्ट कार्बन एटम बाय द रिमूवल ऑफ व्हाट, एन OH ग्रुप निकल जाएगा, ठीक है। ओके वेरी गुड। देखो अब क्या होगा, दिस सेकंड कार्बन इज नॉट इन्वॉल्व,
तो ओनली द कार्बन दैट इन्वॉल्व इज थर्ड कार्बन एंड फिफ्थ कार्बन। ओके, कैसा होगा देखो, सपोज एक दूसरा वाला न्यूक्लियोटाइड लेंगे हम, ठीक है। देखो यहां पे क्या हुआ, फर्स्ट दिस CH2OH जो है, यहाँ पे पहला फ्री OH ग्रुप यहाँ पे होता है, ये फर्स्ट फ्री है, ये सेकंड फ्री है, ठीक है। तो फर्स्ट फॉस्फेट ग्रुप कहां पे आके ऐड होगा, फर्स्ट फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे ऐड होगा, PO4, यहाँ पे फॉस्फेट आ गया, सपोज फॉस्फेट आ गया, ये दिस फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड विद व्हाट, इसमें अटैच होगा फिफ्थ कार्बन में अटैच होगा, कौन सा कार्बन में, दिस फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड विद फिफ्थ कार्बन, ओके और नॉट। देखो अभी क्या होगा, दिस इज द अनदर न्यूक्लियोटाइड हैविंग, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऑलरेडी बेस हो चुका है, सपोज यहाँ पे हम दे दे कौन सा नाम, ग्वानिन दे दे, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा देखो, यहाँ पे दिस इज H, दिस वन इज ऑल्सो H, दिस वन इज H, दिस वन इज OH, दिस वन इज H, दिस वन इज CH2OH। देखो यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, इट इज ऑलरेडी अटैच्ड विथ फॉस्फेट, है कि नहीं, दिस कार्बन इज ऑलरेडी अटैच्ड विथ phosphate. Now the thing is that this phosphate will going to form a bond with this sugar, ठीक है। देखो ये एक न्यूक्लियोटाइड है, दिस वन इज ए न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, दिस वन इज ऑल्सो ए न्यूक्लियोटाइड, ओके। one nucleotide attached with another nucleotide and gradually various nucleotides are combined with each other to form a complex chain known as what, that is called polynucleotide chain. Remember this one nucleotide attached with another one by which bond, that is most important। देखो कैसा होता है, इस शुगर में क्या हो गया, ऑलरेडी फिफ्थ कार्बन में एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो चुका है, तो another nucleotide is also there which contain the fifth phosphate group in the which carbon, fifth carbon atom, okay। now the only देखो इस फॉस्फेट ग्रुप अब किससे बाइंड करेगा, दिस फॉस्फेट ग्रुप नाउ बाइंड्स विद द सुगर, ओके, दिस फॉस्फेट ग्रुप नाउ बाइंड्स विद दिस सुगर, दैट्स व्हाई बॉन्ड इज फॉर्म, ओके। कैसे बाइंड करेगा, देखो यहाँ पे कौन सा फ्री ग्रुप है, एक नंबर ऑलरेडी ग्रुप फिक्स्ड हो गया है, फिफ्थ नंबर ऑलरेडी फिक्स्ड हो गया, ओनली द रिमेनिंग वन इज कार्बन नंबर थर्ड, दिस कंटेन द OH ग्रुप। देखो अभी क्या होगा, इट लिंक्स विद दिस वन, it links with this one, this phosphate will link with this OH group of this carbon atom third, okay। शुगर का 3 नंबर कार्बन में ये फॉस्फेट जाके इस 3 नंबर कार्बन पर अटैच होगा। देखो यहाँ पे 5th नंबर कार्बन है, यहाँ पे 3 नंबर कार्बन है, यहाँ पे 5th नंबर का, तो 5 प्राइम से 3 प्राइम, फिर देखो कैसे होता है, ऐसा होता है, ये 5 प्राइम हो गया, दिस वन इज 3 प्राइम, फिर अगेन 5 प्राइम, दिस वन इज अगेन 3 प्राइम एंड दिस इज 5 प्राइम। That's why DNA form the helix. DNA is helix. DNA is helical. Why? Because of this nature. Because one remaining in this position and the other remaining, the bond takes place in 5 prime and 3 prime direction, not in other carbon atom. That's why it formed like this. Okay. That's why it is called helical. That's why known as DNA is what? Helical. Because one is attached with the 5th number carbon and another gets attached with the 3rd number carbon. Because since it contains the OH group. Only the OH group present in 3rd or 5th, one is attached with 5th, this one is attached with 5th, so now the bond takes place between phosphate with 3rd carbon atom of the another sugar phosphate में linkage होगा, this linkage is known as, देखो इसको क्या बोलेंगे, ये लिंक कर रहा है कहाँ, यहाँ पे भी लिंक कर रहा है, तो इसके साथ 5th नंबर कार्बन के साथ और इसके साथ 3 नंबर कार्बन, यहाँ पे 5th नंबर कार्बन है, यहाँ पे 3rd कार्बन है, 3rd कार्बन 5th कार्बन, ओके। एक शुगर का 5th कार्बन अनदर शुगर का 3rd कार्बन के साथ लिंक हो रहा है। The link occurs between 3rd carbon of one sugar and 5th carbon of another sugar. Okay, यहाँ पे फॉस्फेट है, यहाँ पे what सुगर है, तो फॉस्फेट और सुगर के बीच जो बॉन्ड होता है क्या बोलते हैं उसको, फॉस्फोडाइस्टर। कैसे होता है देखो, since there is phosphate is involved, that's why it is known as phospho. Since phosphate is involved, that's why it is called phospho, because phosphate bond takes place twice. ये एक बॉन्ड है, ये एक बॉन्ड है, दो बॉन्ड है, कार्बन के साथ एक तो बॉन्ड है और शुगर के साथ एक बॉन्ड है, दो बॉन्ड है, एक बॉन्ड कार्बन के साथ होता है और दूसरा बॉन्ड शुगर के साथ होता है, ठीक है। बिकॉज वन हैविंग कार्बन एंड अदर हैविंग व्हाट, फॉस्फेट, एक कार्बन फॉस्फेट के साथ अटैच है
एंड दूसरा शुगर के साथ, ठीक है। देखो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डाई, बिकॉज फॉस्फेट बॉन्ड ट्वाइस एंड एनी बॉन्ड विथ फॉस्फेट ग्रुप इज नोन एज व्हाट, शुगर के साथ अगर फॉस्फेट बॉन्ड होता है तो इसको ईस्टर बॉन्ड बोलते हैं। कौन सा बॉन्ड बोलते हैं? डाइस्टर बॉन्ड। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज फॉस्फो। फॉस्फो मींस फॉस्फेट इज बॉन्डेड ट्वाइस, डबल बॉन्ड है, ये एक के साथ थर्ड कार्बन एटम में बॉन्ड कर दिया और एक के साथ फिफ्थ नंबर कार्बन के एटम के साथ बॉन्ड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे फिफ्थ नंबर कार्बन इन्वॉल्व है, यहाँ पे थर्ड कार्बन इन्वॉल्व है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डाई, बिकॉज इट बॉन्ड ट्वाइस, यहाँ पे फिफ्थ नंबर कार्बन में, यहाँ पे 3 नंबर कार्बन में, ठीक है। एंड व्हाई इट इज कॉल्ड ईस्टर, एनी बॉन्ड विथ शुगर इज नोन एज व्हाट, एनी बॉन्ड विथ शुगर इज कॉल्ड ईस्टर बॉन्ड। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इन दिस वे वेरियस nucleotides are arranged with each other. Always remember, nucleotides are joined with each other by which bond? Nucleotides are joined with each other by which bond? That is called phosphodiester bond. Always remember phosphodiester. It is the backbone of DNA. It is also known as what? Backbone. This is called backbone of the nucleic acids or DNA. Always remember. One gets attached with the third number carbon, one gets attached with the fifth number. Phosphate, यहाँ पे fifth number carbon में attached है, यहाँ पे third number carbon. तो 5 3 5 3 5 3 ऐसा चलता जाएगा। 5 में शुरू होगा, कहाँ पे खत्म होगा? लास्ट में एंडिंग यहाँ पे ही होगा, थर्ड नंबर कार्बन में ही उसका एंड होता है, ठीक है। That's why one running from 5 prime to 3 prime and other running from 3 prime to 5 prime. समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर? ओके। देखो होता कैसा होता है, देखो ये जो प्यूरिन एंड पायरिमाइडिन बेस है, these are the 2 nitrogenous bases was determined by इसका the presence of 2 nitrogenous bases inside a DNA molecule was determined by, किसने डिटरमाइन किया था? was determined by Kossel determined the presence of 2 nitrogenous bases group, that is one purine group, another one is pyrimidines group. Presence of nitrogenous bases inside the DNA was determined by Kossel. Okay, another term, presence of phosphate group. Presence of what? Phosphate group. Presence of phosphate group and pentose sugar. And pentose sugar was determined by whom? Levin. Okay, presence of phosphate group and pentose sugar. pentose sugar कौन सा आता है? 2-deoxyribose. 2-deoxyribose दोनों ग्रुप होता है, यहाँ पे एक तो, यहाँ पे एक तो, ठीक है। That's why it is called what? 2-deoxyribose. Presence of this pentose sugar in the DNA and presence of phosphate group inside the DNA was determined by whom? By Levin determine किए थे कि भैया डीएनए में पेंटोस शुगर होता है जो कि बोलते हैं जिसको डिऑक्सीराइबोस, और क्या होता है? नहीं भैया, इसमें क्या होता है? इट आल्सो कंटेन द फॉस्फेट ग्रुप व्हिच इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। समझ में आ रहा है कि नहीं? हो रहा है तो वेरी गुड। दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, हाउ द न्यूक्लियोटाइड्स आर अरेंज्ड इनसाइड द DNA molecule to form a complex polynucleotides, and various nucleotides are arranged to form what? To form a polynucleotide chain. बहुत सारे क्या होता है? बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स ज्वाइंट होके एक कॉम्प्लेक्स चेन बनाते हैं जिसको बोलते हैं क्या? इसको क्या बोलते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन और नथिंग बट द डीएनए। ओके, इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए।